गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और उस टाइप में से हमने सिर्फ एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके अंदर में जो सब लेवल्स थे जैसे बडिंग, फिर उसके बाद बाइनरी फिशन, देन स्पोर फॉर्मेशन, इन सब टाइप्स को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ा था। नाउ द नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देता है, जस्ट सच एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, together we can say multicellular organisms basically, and this type of reproduction is named as sexual mode of reproduction. Now उस दिन हम लोगों ने what we have seen कि what were the differences between this asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. एक मेजर डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएशन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जैसे एग्जांपल पकड़ लो, बाइनरी फिशन ऑफ एमीबा। एमीबा का जो बाइनरी फिशन होता है, एक न्यूक्लियस, वन सेल, वहां से दो सेल डिवाइड होके बनता है। नाउ द मदर सेल एंड द डॉटर सेल दोनों ही दे आर एग्जैक्टली सेम, but in sexual mode of reproduction variation occurs. The higher level organisms starting from the herbivores, carnivores, जो भी हैं multicellular organisms, the variation occurs. Now the question comes, वो variation कहाँ से होता है? The variation occurs in the cellular level. It occurs in the DNA, deoxyribose nucleic acid. Now, how this mode of reproduction happens? What is the process? How this mode is and a new offspring is born, a new generation comes. Now, what happens in the multicellular organism? There are two types of cells involved. One is called the male germ cell or the male gamete, और दूसरा है फीमेल जार्म सेल या फीमेल गैमेट। नाउ आउट ऑफ दिस द मेल जार्म सेल इज मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है विच कैन मूव, एंड दिस पार्टिकुलर मेल जार्म सेल फ्यूजेस विद द फीमेल जार्म सेल। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन द मेल जार्म सेल एंटर्स द फीमेल्स बॉडी and it fuses with the female germ cell, or it is known as egg cell, and they two fuse together and ultimately a new generation is born. Now the process of development is not in a single day or even a one month or 2 months. It takes 9 months. I'm taking the example for a human being. It takes 9 months where a particular embryo is developed. Embryo means just before birth. The baby which remains inside the mother's stomach, it is known as embryo. Now you can ask question, during the time of pregnancy, what happens? Now the baby is not inside the stomach. Okay, now the female germ cell is produced in the ovary. Ovary produces the female germ cell or the egg cell. Now what happens? From the ovary, the egg cell comes to the uterus of the female. Now when the male germ cell enters the body of the female, the motile male gamete, which is called the sperm cell, what happens? They fuses together and ultimately the embryo
और द न्यू जनरेशन जो कि जन्म होने वाला है, इट स्टार्ट्स डेवलपिंग बाय meiosis cell division. Mitosis, meiosis, you have studied it in class 9, by meiosis division. Now what happens in that situation? We know that genes are the hereditary units. So some of the characteristics are transferred with the help of the male gamete and some of the characteristics are transferred from the female gamete. Now how these characteristics are transferred, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, in details we will study it in heredity. Now this process, what happens कि fusion हुआ. Now ultimately when the newborn baby is, the cell is developing, after 9 months of pregnancy the baby is born. Now during this course of pregnancy period of 9 months, उस particular offspring को, the offspring needs some nourishment. It needs the various types of food nutrients, carbohydrates, vitamins. Now it gets that particular sort of nourishment. वो nourishment मिलता है उसको from the mother. How? With the help of a particular structure called as placenta, which is connected with the baby's stomach. All the things, the various types of nutrition, proteins, vitamins, amino acids, वो प्लेसेंटा के जरिए बेबी को इस पीरियड में मिलता रहता है. And ultimately when the 9 months period is over, the newborn baby comes to the world. So this is how the reproduction process in higher level organisms take place. Clear? समझ में आया? Okay. Coming to the next part, which is called reproduction in the flowering plants. Now what are flowering plants? इनको क्या बोला जाता है in biological language? Angiosperms. ठीक है. नाउ उसमें देयर आर सर्टेन पार्ट्स जो कि पार्टिकुलर फ्लावरिंग प्लांट्स को डिवाइड करता है दो पार्ट में. नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर? वी विल फाइंड सेपल्स, वन पार्ट, पेटल्स, देन स्टेमेंस एंड कार्पेल्स. If you can go through your NCERT book, you will find the pictorial representation of a flower. This diagram will be important. So stamens, carpels, then petals and sepals. These are the four parts. Now the petals is divided into three parts: ovary, style and stigma. Sorry, pistil. Extremely sorry. This is pistil. Pistil is segregated or divided into three parts: ovary, style and stigma. And the stamen is divided into anther and filament. Now the carpel part is in the middle part. ठीक है? The carpel part is in the middle part. Now अगर एक पार्टिकुलर फ्लावर में कोई भी एक रहता है, स्टेमेन और कार्पेल, इट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. अगर दोनों रहता है, it will be called as bisexual flower. Now the example for unisexual flower is papaya, watermelon. This is unisex. उनमें either stamen होता है या फिर carpel होता है. And in case of both stamen and carpel, we will come across the example of hibiscus and mustard. ठीक है? Now how the reproduction happens, let us go through the process in details. Now what happens is that you will find there are three parts: ovary, style and stigma. Now what happens
there. Now if you consider about the female part, okay, the ovary which is in the middle of the flower, it is a bulged out portion. वो फ्लावर वास देखा है ना, फ्लावर वास जैसा होता है. द फ्लावर इट इज जस्ट लाइक द bulged out portion, ovary, which contains the egg cell. Egg cell will be called as the female germ cell. ठीक है. Now the middle part will be called the style. फ्लावरिंग प्लांट में देखना, एक मिडिल से एक लंबा सा पोर्शन ऐसे वायर के माफिक, और ऊपर में उसका येलोइश कलर का एक डस्ट पार्टिकल जो कि हाथ लगाने से इट बिकम्स समथिंग येलोइश इन कलर. इन दैट सिचुएशन दिस पार्टिकुलर पार्ट विल बी कॉल्ड एज द एंथर. जो हमारे हाथों में लगता है ना, दिस इज एंथर, जहां पे वो मेल जार्म सेल प्रेजेंट रहता है, विच इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स. पोलन होता है. अगर उस मिडिल वाले पार्ट में देखना, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, उसमें एक येलोइश कलर का होता है, वो हाथ लगाने से उसमें डस्ट पार्टिकल्स की तरह लगता है उसको. इट इज कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन्स. नाउ व्हाट हैपेंस, द स्वॉलन पार्ट, द मिडिल जो कि ऐसा है, द शेप इज लाइक दिस टाइप ऑफ शेप. It is called the ovary, which contains the egg cell. This is called the ovary, which contains the egg cell. Now, the middle part of that particular structure is called the style, and the terminal part is called the stigma. ठीक है? Now, these are the description of the various structural features. Now, how this process happens? कैसे एक नया seed बनता है? कोई भी प्लांट का, वी टेक आउट द सीड एंड प्लांट इट अंडर द सॉइल. हाउ इट हैपेंस? इट हैपेंस बाय द फ्यूजन ऑफ दोज पोलन ग्रेन्स एंड द एग सेल. ठीक है. इट हैपेंस बाय द फ्यूजन ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड द एग सेल, द फीमेल germ cell. नाउ व्हाट हैपेंस देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. द overall process is called fertilization. ठीक है. The overall process is called fertilization. Now in that process एक होता है self pollination and another is called the cross pollination. Self pollination and cross pollination. Now what is self pollination? देखो, वो जो pollen होता है, pollen जो होता है वो egg cell के साथ फ्यूज होगा. That fusion will create the future embryo or the seed, जिससे कि नया प्लांट या नया पेड़ जो है वो वहां से उगने वाला है. Now how it happens in self pollination? Self pollination में the pollen grain is transferred in the same flower. एक ही फ्लावर में वो pollen grain ट्रांसफर होगा. ऊपर से नीचे वो जो ट्यूब लाइक पोर्शन है, like this. If you can see in the next page of this particular structure, in the right hand side of the page, there is a diagram in your NCERT page number most probably 135, I guess, page number 135. The pollen grain will be transferred via this pipeline, this thin pipeline, to the ovary. Ovary में egg cell होगा, वहां पे ट्रांसफर होगा. If the pollen is transferred in the same flower, it will be called as self pollination. और अगर एक फ्लावर से दूसरा कोई फ्लावर में वो पोलन ट्रांसफर होता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होने के लिए वो कोई मैजिक नहीं होने वाला है. इट विल बी कैरिड आउट बाय सम नेचुरल प्रोसेस. जैसे फूलों के ऊपर जो इंसेक्ट्स बैठते हैं, जैसे हनी बीज एंड अदर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, वो जब हनी दे आर एक्सट्रैक्टिंग हनी फ्रॉम दैट फ्लावर, तो पोलन जो है उनके मुंह में लग जाता है. दीज आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स. तो वो पोलन, वो जब दोज पोलेंस, जब वो हनी बी दूसरे फ्लावर में जाके बैठेगा, तो वो पोलन उस फ्लावर में ट्रांसफर होगा. समझ में आ रहा है? या फिर विंड, हवा जब चलता है
In that situation also pollen is transferred to another flower. या फिर कोई पौधा अगर कोई लेक रिवर के सामने है तो पानी के जरिए वो ट्रांसफर होता है. So these are the mode of transportation how pollen is transferred from one flower to another. ठीक है. तो in that situation the pollination will be called as cross pollination. Now जब suitable pollen वो फ्लावर पे जाके गिरेगा, ए ट्यूब इज डेवलप. क्योंकि पोलन जब वो फ्लावर के ऊपर जाके बैठेगा, पोलन इज नॉट एन इंसेक्ट, वो थ्रू विद द हेल्प ऑफ हनी बीज और द विंड जब पोलन जाके उस फ्लावर के ऊपर बैठेगा, ए पार्टिकुलर ट्यूब इज डेवलप्ड. एक ट्यूब डेवलप होगा. वो ट्यूब डेवलप होके, क्यों ट्यूब डेवलप होगा? बिकॉज द पोलन हैज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट पार्टिकुलर फ्लावर टू द inside of that particular ovary. ठीक है. Suppose if you consider this part as the ovary और ऊपर में there is pollen. Now there should be a mode of transmission जहां पे एक ट्यूब डेवलप होगा like this and that pollen will be transferred to this particular ovary which contains the egg cell. Now जब वो कांटेक्ट में आएगा egg cell, the process of fertilization starts. In that process of fertilization, वो by the help of the cell division, after a certain interval of time, the new seed is developed. For example, अगर तुम mango, in the mango season, when you are taking the mango को पूरा खा लिया, तो mango से क्या निकलता है? The seed of the mango comes out. या फिर jackfruit. हाँ. So that seed is the result of the particular fusion of pollen grains and the egg cell जो कि ओवरी में रहता है. तो फ्यूजन होने के बाद the seed develops a tough coat. मैंगो का जो सीड है ऊपर में क्या होता है? उसका छिलका होता है, छिलके से पूरा ढका हुआ होता है. या फिर जैकफ्रूट या फिर वाटरमेलन, they are all covered with a tough coat seed and that particular seed contains the future generation of that particular plant. So this is how the in flowering plants reproduction occurs. Clear हुआ? Now after this we have the particular part where there are certain types of diseases. There are certain types of diseases which occur. These are called STD, sexually transmitted diseases. The examples are syphilis, SYPHILLIS, syphilis. Then HIV/AIDS, human immunodeficiency virus, या AIDS का फुल फॉर्म होता है acquired immunodeficiency syndrome. These are certain diseases which occur due to this STD, sexually transmitted diseases. Okay. In between that, I want to say you page number 137. वहां पे you will find a figure which is called the female reproductive system. You will have to go through this diagram very seriously because वहां पे what will they do? वो डायग्राम देके लेबलिंग करके ABCD करके दे देगा. नाउ पहले उसको लेबलिंग करना है और A का नाम, सपोज एक है, A का नाम वन पार्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट. तो यू हैव टू राइट द फंक्शंस आफ्टर लेबलिंग दोस. Like this type of question comes from there. Now the next topic is how, see, the population of India is 130 crores. Now to minimize or not to population increase नहीं देने के लिए the government has come with several types of schemes. ये तो हुआ the political scenario. Now what is the medical scenario? How can we prevent the increase of population?
Now, while a particular person, he may have a single child, he may have a two child. Now, in certain situations, like if you go to backward areas, in remote villages, where you will find people having 7, 8 children. Now, in that situation, there is no need of that, because you have to think there may be कि वहाँ पे I have 7 to 8 boys जहाँ पे they can earn for my family, but in return what we are getting, it is increasing the population of the country. It is increasing the population of the country. Now, in medical aspect, how can we prevent the pregnancy? There are certain methods. जैसे number 1, surgical methods. With the help of the surgical methods, the process of pregnancy can be prevented. Next, copper T. Copper T is a device which is put in the uterus, ताकि the egg cell which is traveling from the ovary to the uterus, it is not coming. So these are the certain methods by which we can prevent the pregnancy in respect of medical scenario. And another thing, कि whenever any parents, the determination of an embryo, the gender determination, a newborn baby is a boy or a girl, अगर वो particular parent डॉक्टर को when they give money कि मेरे अंदर whether it is a boy or a girl, this is a criminal offense in under Indian law. So overall we can say that under this sexual mode of reproduction, the process in higher level organisms, that is in multicellular organisms, are required to continue their generation. Because without this mode of reproduction, a person, if you consider human being, if you consider other carnivores, herbivores, they will not be able to continue their generation, and ultimately that particular organism will become extinct. So I hope you have understood. पूरा समझ में आया? Okay, thank you.